Wellness show sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, वेलनेस शो में हम बात कर रहे थे किरण के लाइफस्टाइल की और हमने आपको दिखाया था, रीकैप दिखाया था, जिसमें किरण की पूरी लाइफ जो स्टाइल है उनका, जैसे वो कैसे क्या खाती हैं, कैसे वो जो है ज़िंदगी गुजारती हैं, वो हमने आपको दिखाया था। अब हम देखेंगे कि 3 महीने के बाद जब वो आई हैं और उस 3 महीने में है बल्दीश ने भी और डॉक्टर नबील ने भी उनको काफ़ी जो है वो एडवाइस भी दी, सजेशंस दी और उनको मॉनिटर भी किया कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या चेंज उनमें आया है। ये थी पार्टियां आपकी, लेकिन अभी तो आप हॉलिडे से वापस आ रही हैं, तो वहाँ आपकी पार्टियां कैसी रहीं? मैं अभी इंडिया से वापस आई हूँ छुट्टियाँ मनाकर, तो काफ़ी वहाँ पर बहुत पैम्परिंग हो गया। ये तो मैं कहती हूँ आपकी पार्टियां जो हैं रंग लाई हैं। तो बेसिकली पार्टीज़ एंड रात में देर से सोना, पार्टीज़ करना, खूब सारा खाना, एंड आई डिडंट वांटेड टू डिसअपॉइंट देम एज वेल। पर ये प्रॉब्लम था कि लैक ऑफ एक्सरसाइज वहाँ पर जाकर, सो वो बहुत मुश्किल। लेकिन जाने से पहले, before you went, how much weight were you recording your weight or? Yes, I was doing that. I lost around 4 kgs. 4 kilos. Yes, that's right. So then you've been away for quite a while, huh? Yeah, I was away for almost 4 weeks. Achha, okay. So that was a long period of I think in the first 4 or 5 weeks, you really lost a lot of weight. This is what I remember you telling me. Yes, I did. And yeah, so after that, वो सारा का सारा जो था, वो पूरा इंडिया में सबका सब पानी में चला गया। But I'm still continuing on my diet. Like I'm not eating, like I'm just having one meal and. Okay. Talking about one meal. Yes. Actually, a lot of people, a lot of the viewers may also be thinking that to lose weight, it's best not to eat, or just to eat one meal a day, and that is the wrong thing to do, because what tends to happen is your metabolic rate slows down as well. So it's very important, Kiran, that to lose weight, never skip meals. Make sure you're eating 3 regular meals, but you need to watch the portion sizes, need to combine exercise. But this thinking of, okay, I'll skip breakfast, I'll have fruit for lunch, and then I'll just have an evening meal. You might lose a few pounds pele, like after that you're going to be really stuck. You'll actually probably start gaining weight as opposed to losing. So keep that in mind. I think you lose interest in keeping up all this diet plan, you know, which you had worked out with Baldeesh, because you know जब इतना ज़्यादा आप अपने ऊपर pressure डालेंगे तो सारी life का जो है वो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा. So it's better to have just everything done in moderation, as Baldeesh put it. कितना weight lose किया है, हाँ, जो आप lose किया, कुछ fluctuations हमें नज़र आ रही हैं. Interesting to see. क्या? Okay. Absolutely. उतार दो, थोड़े और कम हो जाएंगे. Every bit counts. It's about 71. Okay. Yes. तो पहले कितना था आपका? 73. 73. बैठे. Okay. So you have lost 2 kilos. 2 kilos. We have to keep that in mind. Yeah, but also, you know, we have to remember that sometimes we're talking in kilos, sometimes we're talking in pounds, sometimes stones, and I think. Although 2 kilos may not sound much, 2 kilos is about 5 pounds, close to 5 pounds. 4.5, yeah. You know, 2.2 pounds to a kilo. So it's important to realize that it's quite a, okay, it's not ideal, but you've been on holiday, or holiday ke aane se baad bhi, you've still managed to not put on. So I think you have to be positive and, you know, say that's great, you know. So pat on your back, definitely. You deserve that. And this is a real life example. लेकिन ऐसे ही होता है ना. ये तो नहीं है कि अब आप सारे के सारे जो लोग हैं वो स्ट्रगल करें और फिर वेट रिड्यूस करने में कामयाब भी हो जाएं. तो ऐसे तो होता है. तो इससे बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना और अपना जो मिशन है वो जारी रखना है. Definitely, I am still on my mission. Tell us, I think, when you lost the 4 kilos, what did you do during that phase to lose your 4 kilos? Yeah, that ideal क्या changes की थी आपने अपनी diet और lifestyle में which got the 4 kilos off? Yeah, like basically follow the diet you gave me, having a limited portion of meals and on the right time, which really helped me. And then regular exercise. So
having that, yeah. That was the main culprit. I mean, the lack of exercise in India. This is what you were. Yeah, and if I don't actually exercise even for a week, then I really put on. I have a tendency of putting on weight very quickly. Kiran, originally, if you remember, she was always exercising anyway. You know, from the gym. Yes. So the deficit was there, and obviously being on holiday, that was one thing that wasn't being done. Yes. And so that didn't help, obviously. Yeah. But the food maybe was different. Sure, I mean, sure, so of course, yeah. On the diet, the food was given like proper meals and on proper time. So that really helped me. Yeah, and also that's not in your control in India what you're eating, because people, they are inviting you or they're just taking you out, so naturally there won't be much choice. Healthy choice is very rare. Plus also you don't want to be miserable, do you? Yes, you know, like when you go somewhere and somebody offers you something, you say, actually, you know, I'm on a diet. They say, I didn't want to sad. disappoint anybody, especially my mom. Who really. If you invite your friends and you don't want to cook, what are the healthy alternatives for takeaways? Like a Subway sandwich. No, but not pizzas or burgers except for that. So I think what are you going to have then? Well, chapatis or... Acha, wo ghar mein you'll make everything at home? Yes. But you know, there's actually a lot of, I think a lot of us don't realize there's a lot of choice out there, even perhaps not so much takeaways, but when you're looking something like pizzas and things, you can actually ask them to do a thin crust as opposed to the thick. You can ask for half the amount of cheese to go on it, ask for extra vegetable toppings. So you can still have those foods. Cheese is also available in some of the takeaways. So you know, so you can still enjoy those foods, but half the calories. And you know, things like avoid the garlic bread bit, have ordinary bread, and you know, instead of having any kind of pasta with a cheese sauce, have a tomato-based sauce. So there are choices. You don't have to say, okay, I can't have this or I can't have that, but you can look for alternatives. You have to choose sensibly. Okay, so quite difficulty, you know, when initially, you know, when you were actually following the diet plan, did you have any difficulty in any particular area? Of course, initially I had, it was a bit difficult for me to follow because my whole diet plan was changing. But then gradually after a week, I found this better, following the diet plan, because I think the main, sorry to interrupt, but I think the main, if I remember correctly, it wasn't that you were eating too much at all, but I think what was happening, your timing thi, it was irregular. Your eating pattern was irregular. Yes, that's and right. also, I remember you saying that, you know, you obviously did exercise, but your breakfast was sometimes a tea and a biscuit. Yes. That was your breakfast. That's right. And then you went to the gym and then, you know, came back, and of course you were starving then. So I think it was just... again, I think you had 2 breakfasts in the morning. So I think when I worked out her diet plan was based around the fact about making sure there's a decent breakfast. You know, like this, in English they say, you know, eat breakfast like a king. And then as the day goes, you eat smaller and smaller portions, whereas most of us actually do the opposite. You know, we just eat more in the evening and less during the day. And your mother has hypertension as well. Blood pressure का है, तो I think ये बड़ा अच्छा आपके लिए होगा कि जो salt intake है वो थोड़ी कम करें, diet में plan को follow करें, so that आपको hypertension बहुत जल्दी ना आ जाए. So have you had your blood pressure checked at any point? No, I haven't. It would be a good idea to get it checked. जी हाँ, तभी हम मेरा ख्याल है बाकी का हिस्सा देखेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो ये डाइट प्लान आपने दिया था, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर हर और फॉर यू टू एक्चुअली टू कन्विंस हर दैट दिस इज द राइट diet plan for her? It wasn't difficult to convince, because I think Kiran already had in her mind positive, she was ready to make the change. So unless the individual is ready, it's no point giving anybody a diet plan. It has to come from within. I'm going to do something. And obviously, as I said on the clip, it wasn't her calorie content very much, it was the irregularity. And because of that, she was eating odd things which were adding up the calories. So we didn't have to do much work actually. We just changed the timing and obviously portions and types of certain foods. आपका क्या रोल था? Because you know she didn't have any heart problems or anything. लेकिन मेरे ख्याल हम पहले एक कॉलर ले लेते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.
जी मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में ये आजमा के देखा भी हुआ है कि कुछ चीज़ें खाने से भी वेट लूज होता है, जैसे कि लौकी है, लौकी का इस्तेमाल करें उसके साथ भी वेट लूज होता है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन के लिए सेलरी और पाइनएप्पल का यूज़ किया मैंने, उसके लिए भी मुझे फ़ायदा हुआ। अभी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मसल बिल्डअप करने के लिए कौन सी खुराक खाई जाए कि जिसके साथ आप मसल को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं एक्सरसाइज के अलावा। मेरा ख्याल है ये डाइट का सवाल हाँ, डाइट का सवाल है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो जैसे आपने बताया कि कई चीज़ें वेट लॉस हेल्प करती हैं, it's not quite clinically evident कि ये चीज़ें खाने से what you might be doing लेकिन is वेजिटेबल तो जो भी खाएं, मेरा मतलब कहने का कि वेजिटेबल में कैलोरीज तो बिल्कुल कम होती हैं anyway, so all the vegetables are very good. और स्पेशली सैलरी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। हाँ, और लौकी में भी। Yeah, like, that's why the vegetables are very good. So what you might have been doing inadvertently is cutting your calorie intake anyway, because you're having that instead of something else. So that's great. Carry on. If it's worked for you, well done. दूसरी बात आपने पूछा about muscles. Basically जो प्रोटीन हम खाते हैं, अगर आप मीट खाते हैं या फिश खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो obviously things like dals, the chanas, the soya, these are the protein foods. और muscle जो है वो प्रोटीन के उनके ताल्लुक है. So it's important to keep a small amount of protein in every meal. But we in this country especially, we have too much protein. You know, we need to just cut it down a little bit anyway. We need to balance it. Yeah. और आप जैसे मैं कह रही थी कि उनका जो है लाइफस्टाइल में उनके मतलब जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है उसमें उनकी मदर को ब्लड प्रेशर था। जी ब्लड प्रेशर था और आई थिंक इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग को डायबिटीज़ की भी बात थी जी। तो इसलिए तो ये वही बात है, फिर से मैसेज सारे व्यूअर्स को है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की, तो ये गो हैंड इन हैंड। ये सारी चीज़ें जो है रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। किसके लिए रिस्क फैक्टर फॉर अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक। तो उससे बचना है, उससे ज़िंदगी लंबी होगी। लेकिन अगर ज़िंदगी लंबी तो डेफिनेटली सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये डाइट भी जो सारी बात है, ये आई थिंक इफ वी सॉर्ट ऑफ ट्राई टू कोरिलेट सारा कुछ। तो ज़्यादा जो वेजिटेबल्स लोग खाते हैं उनकी डाइजेशन अच्छी रहती है, उनको और इश्यूज नहीं होते हैं। और फ्रूट्स जो ज़्यादा खाते हैं जनरली उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक बैलेंस और मॉडरेशन ये हमारे जो की वर्ड्स हैं कि बैलेंस एंड मॉडरेशन इन लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हमारे वेलनेस शो का मंत्रा है कि बैलेंस एंड मॉडरेशन दैट्स द की टू योर हेल्थ। और आप मुझे ये बताएं कि हम जब ये बात कर रहे थे कि जो बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन एनीवे जो है डाइट की जो बात है वो तो डेफिनेटली ये एक है कि बहुत ज़रूरी है। I think what we need to remember, Yasmin, is and the viewers, that you shouldn't think of it as a diet. Okay, you should think of it as healthy eating. क्योंकि when I see patients and you mention the word diet, पहले ही तो जैसे अब तो सैलड खाना पड़ेगा, पत्ते ही खाएंगे, ये खाएंगे. It shouldn't be regarded as a diet. So you need to look at it कि this is going to be for the rest of your life and it's going to be just a healthy, balanced meal. जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे पूछना ये था, डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी, वो ये थी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल रेशियो है एल्डरली लोगों के लिए ओवर द एज ऑफ 65, एचडीएल और एलडीएल का, उसका बेस्ट रेशियो क्या आप समझते हैं होना चाहिए? और जो आपकी डाइटिशियन मुझे पूछना ये है कि वो कौन सी फूड्स हैं एक्सरसाइज के अलावा ऑफ कोर्स कि जो बहुत एलडीएल को रिड्यूस करने में मदद करते हैं? Thank you very much for your question, सैयद साहब। Thank you very much as always। आपकी इनपुट जो है इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं और आप हमेशा जो है वो जो अच्छे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं। तो देखें एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको ज़्यादा होना चाहिए और जो एलडीएल है उसको लो होना चाहिए। तो रेशियो शुड बी इन फेवर ऑफ हाई एचडीएल एंड लोअर, बल्कि लोएस्ट एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो इसमें जो एचडीएल है, सच्ची बात ये है कि बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं और सिर्फ इसमें एक ऐसा ट्रायल है जिसका हम रेफरेंस देते हैं कि जिसमें सिर्फ एचडीएल को देखने की कोशिश की थी कि इसके कोई
अगर हमने रेज करना है तो उसका कितना रेशो कितना रेज करना इसको है, हम मेरे ख्याल में कंटिन्यू करेंगे किसी और दिन लेकिन भी। जो डाइट पे जो एलडीएल को नीचे करने के लिए कौन सी डाइट्स जो हेल्प कर सकती हैं वो क्विकली आप बता दें। आई थिंक we'll just maybe we have to have a break, so we'll see you. The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity.